Hello friends, so this is Ehsan before you again. Now today I got a new lecture for you. So this lecture is related to writing menu. Actually इस lecture में ना जो मैंने ये आज का lecture select किया है, so ये lecture ऐसा है कि इस lecture को करने के बाद ना आपकी writing 1 to 2 बार automatically improve हो जाएगी. But इसको आपको implement करना होगा तभी improve होगी. But before jumping to the actual lecture, I want to say you something that if you like this lecture, please subscribe my YouTube channel and on the contrary, my Facebook page. Okay, thank you. Now let's talk about the lecture. The topic of today's lecture is proofreading of writing. क्योंकि ये लेक्चर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि जब मैं अपने कैंडिडेट्स की राइटिंग चेक करता हूँ ना तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स सामने आते हैं कि प्रूफ रीडिंग अगर हम उनकी प्रूफ रीडिंग करें राइटिंग कंप्लीट होने के बाद तो अपनी राइटिंग हम खुद ही इंप्रूव कर लेंगे मींस एटलीस्ट अप टू 6 बैंड वी कैन स्टैंड. ओके, सो द प्रूफ रीडिंग ऑफ राइटिंग, द फर्स्ट पॉइंट मींस आपको प्रूफ रीडिंग में करना क्या होगा, ये मेन पॉइंट है. अगर मैं स्टूडेंट को हम कह दें कि आप प्रूफ रीडिंग कर लो तो वो प्रूफ रीडिंग में क्या करेंगे कि मींस फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट वो पढ़ लेंगे, वो कहेंगे हमने लिखा ठीक है, बट नो मींस आपको करना क्या है प्रूफ रीडिंग में, दैट पॉइंट्स आई विल लेट यू नो टुडे. फर्स्ट पॉइंट which is very much important about the proofreading, that is grammar. अब ग्रामर में आपको चेक क्या करना है, ठीक है, आपने ग्रामर लिख दी. ओके, सो आपने जब ग्रामर लिख दी है तो उसको अपने चेक क्या करना है, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस फॉर्मेशन. ग्रामर में आपने जो भी बात लिखी है, जो भी आपने एक फ्लो चार्ट तैयार किया अपनी राइटिंग का, सो उसमें आपने जो ग्रामर यूज कर रहे हो मींस आपको कौन सी सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत है. दिस इज अ पॉइंट, सेंटेंस फॉर्मेशन. लेट मी इलैबोरेट द पॉइंट. आपको सेंटेंस कौन सा चाहिए, एक्टिव चाहिए, पैसिव चाहिए, आप जो बात कह रहे हो वहां शुड आएगा या कैन आएगा, एंड मेनी मोर आर देयर. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप कहना चाह रहे हो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द सिटीजंस, आपने ये लिख दिया, बट आप कहना क्या चाहते थे, आप ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, सो मींस वहां शुड आएगा फिर. ठीक है, सो ये है फर्स्ट पॉइंट कि आप जब प्रूफ रीडिंग कर रहे हो तो ये आपको देखना है कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, जो मैंने हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए हैं, जो मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन यूज की है, इज दैट एक्यूरेटली सूटिंग और नॉट. Okay, the next point which is very much important and mostly candidates make this follow. The next point is repetition. Repetition means कि कैंडिडेट्स ना तीन तरह की रेपिटेशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया. आइडिया कैसे, जैसे आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की, द वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग टास्क, whether you are attempting writing class 1 or 2, आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया अपनी. सो जो पॉइंट आपने इंट्रोडक्शन में रखा है आप वही पॉइंट आगे जाके दोबारा डिस्कस कर रहे हो, मींस मे बी यू आर यूजिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज. सो जब लैंग्वेज आप अलग यूज कर रहे हो तो आप अपने आप को ना कंसोल कर रहे हो कि हाँ मैंने अलग आइडिया, मींस आइडिया इज द सेम, सो इट शुड नॉट बी रिपीटेड. द नेक्स्ट पॉइंट वोकैबुलरी, मींस कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप ना बार बार रिपीट करते हो, जैसे आई वांट टू, और ऑन दी कॉन्ट्रेरी एक दो और ऐसे वर्ड होते हैं जैसे गेट, पुट. तो ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो राइटिंग में यूज नहीं करने चाहिए, वो मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में समझा दूंगा. मींस इवन के एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन, दिस वुड बी द आल्सो लेक्चर ऑफ अपकमिंग लेक्चर. बट नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. वोकैबुलरी, कई ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप बार बार यूज कर रहे हो. बार बार कैसे यूज कर रहे हो, अगर टॉपिक कंप्यूटर्स के रिलेटेड है तो आप कंप्यूटर वर्ड ना बार बार यूज करोगे. अगर आपका टॉपिक कोई गवर्नमेंट की चेंजेस के रिलेटेड है तो आप चेंज वर्ड है वो बार बार यूज करोगे. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन राइटिंग, बिकॉज जो राइटर, आप जो एग्जामिनर आपकी राइटिंग चेक करेगा ना वो देखेगा कि आपने एक वर्ड को बार बार यूज किया है. सो इट मींस दिस विल गो, इट विल टेक योर राइटिंग डाउन. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो एसेंशियल वन, दैट इज अ ग्रामर स्ट्रक्चर. ग्रामर स्ट्रक्चर बोथ आर क्वाइट सिमिलर, मींस सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ग्रामर स्ट्रक्चर. ग्रामर स्ट्रक्चर में कैसे कि आप एक तरह के ग्रामर यूज कर रहे हो, जैसे आई वांट टू, again and again you are using every sentence, you are each and every sentence you are writing down I want to, I want to say, I want to say. So this is a
very much negative point of your sentence formation and the grammar structure. You are using the same thing again and again. Please do solve it. जब आप ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट करोगे ना, मींस आपने इंप्लीमेंट कर दिया कि आप अपनी प्रूफ रीडिंग कर रहे हो. सो प्रूफ रीडिंग में आपने देखा कि यार मैं ना ये बार बार यूज कर रहा हूं, सो आपने खुद ही ठीक कर लिया. नेक्स्ट टाइम जब आप वो दोबारा करोगे ना, मींस मे बी यू आर गोइंग टू डू, बट योर माइंड विल लेट यू नो दैट यू आर रिपीटिंग. So this thing you need to keep in your mind this whole lecture. The next point is, let me make you understand about its importance. That is the most common mistakes and also part of repetition, means singular plural. Every word, just for an example, every word is a singular word. So with every we use verbs first form with s or es. But the thing is that mostly students, they use everyone have, everyone will, everyone play. No, everyone plays, everyone has. And on the contrary, singular and plural, both mistakes you make. As for an example, they plays, yeah, they was with me, means you are using the was with the plural subject they. And further one is spelling. You usually know that sometimes students, many students face this problem. They are making spellings wrong. Wrong spelling means there are two reasons behind the wrong spellings. First means you don't know the actual spelling, or you are having a confusion with e or e or double e means double a. These are the confusions with spelling. But another thing is also there. जब आप राइटिंग कर रहे हो ना, तो आपकी जो लिखने की स्पीड होती है वो तेज होती है. ठीक है, आपको स्पेलिंग्स पता होते हैं, बट आप तेज लिखने के चक्कर में ना अपना स्पेलिंग गलत कर देते हो, उस वर्ड को आप इनकम्प्लीट छोड़ देते हो. For an example, congratulation, we all know the spelling of this word congratulation. When we write down smoothly with full attentive mind, so we spell out accurately. But जब हम तेजी से लिख रहे हैं तो हम भूल जाते हैं. So this is the main problem. So this lecture I wanted to share with you about proofreading of writing. So ये ऐसा lecture है, please I do recommend you to implement this lecture practically. So obviously, and I guarantee you can also send me your queries if after implementing this lecture you are unable to find out any change. So please do consult with me, send your writings. Even you can also send your writings to me, means for checking. And on the contrary, you can also, if any confusion, then convert your confusion into question and send to me. I am here to solve your confusions. So this is a lecture. Please do like my lecture and subscribe my channel as well.